But today in this video we are going to do aesthetic wall collage decor and इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ like how you can do this. It's a simple process. It's not that complicated. So make sure you watch the video till the end. And before starting off the video, I just want to say you guys to subscribe to my channel because it gives a huge support. Do like my previous videos and this video as well if you like this content, and do follow me on Instagram because I have uploaded a lot of reviews and I'm coming up with some Christmas decor and things, so make sure you give a follow and stay connected. So जैसे कि I already said, today I'm going to guide you like how you can do a TikTok inspired aesthetic wall collage decor. काफी लंबा नाम है यार. I know TikTok is banned, but this is not a bad idea. These types of videos are so famous these days on YouTube, and I also wanted to do the same because I love aesthetic things and I did it on Diwali. So many people have been asking me that how I did this. जो भी मेरे घर में आते थे, they were like, oh wow, how you did this, it's so different. And whoever just watched my story was like, from where you got it bro. Problem is कि there is really any video by Indian creators, like there are, but there are few of them. मैं सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रही हूँ, so don't spam me, हाँ. Lastly, I watched Zoya Abbas video and she did the same thing, this aesthetic wall collage decor, but she didn't mention the major things like photos कहाँ से लिया, कितना budget पड़ा, कहाँ से print कराया. That is the main thing, guys, because pictures के बिना you can't do a wall collage, right? In which quality did she printed, कौन सा quality ठीक रहेगा, and so on and so on. So she missed on some basic thing and उसके कारण I didn't like that video much because it wasn't helpful. Because I wanted to do the same and I got totally confused like how I'm gonna do it. And I was reading the comments on her video. The same question was asked by so many people. Collaboration from Zooming Stories where they have sent me 24 set of aesthetic pictures मैंने खुद ही select किया था and the quality and everything is selected by me. They just printed it out and sent me and they were actually at good quality. I did a collaboration for Instagram, so don't think that this video is sponsored by them. इन स्टोरी से थोड़े discount codes भी मांगे, so I will mentioning it in my description box or in my screen somewhere. You can use that discount code to get some discounts on printing and stuff. ये पहले ही बता देती हूँ कि it's not a complicated thing, it's very simple. Just आपको थोड़ा टाइम लगेगा pictures को select करने के लिए और उसमें side में adjust करने के लिए. Otherwise it's simple, guys. आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से पेपर में you should set the printing on the side because आप wall decor कर रहे हो and you want it to be long lasting. तो अगर आपको long lasting चाहिए तो make sure you watch the whole process in detail. Okay guys, so पहला process है to search the pictures which you can find from Pinterest. Just go to Pinterest and type aesthetic वॉल कोलाज फ़ोटोज़, और अगर आप नहीं भी टाइप करोगे बस एस्थेटिक पिक्चर्स से ही आपको काफ़ी सारे एस्थेटिक पिक्चर्स मिल जाएंगे. एंड या सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन एंड विच एवर यू लाइक यू कैन सेव इट और डाउनलोड इट. जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं और अब एक फ़ोटो खोलोगे आप तो उसके नीचे भी ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. सो यू कैन सेव इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. Like I'm saving this picture in a new folder, so make sure you make a separate folder ताकि जब आप photos को site पे upload करो तब आपको कोई दिक्कत नहीं आए and it will be really convenient for that. So yeah, like I'm searching BTS aesthetic pictures as well. If you are a BTS fan then you can do it. So I'm saving this picture and yeah, you can select anyone. So I have saved this picture to my separate folder that I have created for uploading. Now we have to go to Zooming Story website. इस website का link मेरे description में mentioned है with the discount code. तो आपको यहाँ जाके स्क्वायर प्रिंट सेलेक्ट करना है एंड मेक श्योर यू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइज़ जो भी आपको ठीक लगे, बट आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर अ बिगर वन क्योंकि आप वॉल कोलाज कर रहे हो. एंड देन सेलेक्ट दैट. अभी आपको ये अपलोड के ऑप्शन में जाके यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द पिक्चर्स दैट यू हैव सेव्ड इन दैट फोल्डर
जैसे मैं यहाँ पे ये ढेर सारे पिक्चर्स सेलेक्ट कर रही हूँ. This set contains 24 pictures, so make sure you select a 24 set of pictures. After uploading the pictures, you have to edit the pictures in the website only. You have to match the ratio that is in square shape, so make sure you just zoom in or zoom out the pictures as per the ratio, and just click on the आगे वाला बटन and सारे pictures adjust हो जाएंगे. अगर ये process आप skip कर दोगे then your pictures will look totally out of size or ratio, so make sure you do that. I'm just selecting randomly because I'm just demonstrating you how to do it. तो चेकआउट करने के टाइम यू विल गेट वेरियस ऑप्शन कि गिफ्ट रैपिंग करना है, तो अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन और यू कैन स्किप इट. एंड एट द चेकआउट make sure you enter coupon, and I want to inform you that this coupon is for new users only, so just type print it. I will mention everything in the link and on the screen you see. Just type it on the coupon section and you will get a discount. यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले से ऑर्डर करा हुआ है. दिस इज़ माई सेकेंड ऑर्डर, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन इट अराइव्स. एंड मैंने इसे ग्लॉस पेपर में प्रिंट करा है इसलिए क्योंकि आप इसे वॉल पे लगाने जा रहे हो एंड यू हैव टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग. तो कभी भी अगर हल्का सा पानी का छींटा या कुछ भी वैसा लगता है तो ग्लॉस पेपर से ईजिली वो हट सकता है. एंड प्लस इट शाइन्स, और लाइट जब इस पर पड़ता है तो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ ग्लॉस पेपर ऑलवेज फॉर अ वॉल कोलाज डेकोर. So now it's time to paste the pictures on the wall. For pasting it, I am using the cello tape. ये cello tape आपको किसी भी stationery store पे मिल जाएगा, but make sure you use this type of cello tape only because it's long lasting. Plus ये easily wall से हट भी जाता है without tearing up the paint. And you have to just make a circle and just stick it together, and then you have to paste it on the picture just like this. एंड कुछ नहीं करना है, बस 3 सेक्शन में लगा के यू हैव टू पेस्ट इट ऑन द वॉल. हाउ यू कैन पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड डोंट वरी, ये गिरेगा नहीं बिकॉज इट्स लॉन्ग लास्टिंग. आप इसको जब निकालोगे तो ही निकलेगा ये, एंड इट विल नॉट टीयर आउट योर पेंट. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ पेस्टिंग इट ऑन अ वॉल. Yeah, this is how I made a TikTok inspired wall collage decor in an aesthetic way. And मैं ये बाकी बच्चे दीवार को भी भरने का सोच रही हूँ. It's looking so damn beautiful and you can really try it to make your room aesthetic. So guys, if you like my video, then make sure you give a thumbs up and subscribe to my channel, and do follow me on Instagram as well. And somehow if you are gonna try this or you have tried this, then do share your experience in the comments. Stay safe guys, bye bye.